अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माला। हम देखेंगे हेल्थ साइकोलॉजी PSY408 का GDB ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड ओपन हुआ है जिसके टोटल मार्क्स 5 हैं। और उसका क्वेश्चन है डिस्कशन क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द रीइंफोर्समेंट ऑफ पेन बिहेवियर्स। एग्जाम्पल विल बी अप्रिशिएबल। मीन्स दैट कि हमने वो फैक्टर्स बताने हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं पेन बिहेवियर्स को। और उसके एग्जाम्पल्स भी आप बता सकते हैं। अब वो फैक्टर्स में मैंने यहाँ पर 4 फैक्टर्स मेंशन किए हैं। आई थिंक इट्स इनफ, क्योंकि जस्ट 5 मार्क्स का ये GDB है आपका। तो आप इसमें 2, 3 या 4 जो है वो बता सकते हैं। यहाँ से वही बात कि इस मेरी वीडियो से आपको जस्ट एक आइडिया हो जाएगा, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, और आप इसी तरह से थोड़ी रिसर्च करके और इस तरह के फैक्टर्स बना के जो कि पेन बिहेवियर्स के को री करते हैं, वो आप ऐड करके उनके अंदर ऐसी डिटेल्स वगैरह लिख सकते हैं। The first one is attention and sympathy. When individual with pain receive attention and sympathy from the others, it can reinforce the expression of pain behaviors. For example, if someone receives extra care, concern, or assistance when they display a pain behaviors, they may be more likely to continue exhibiting those behaviors to receive similar attention and support. And the second is avoidance of responsibilities. Pain behaviors can serve as a way for individuals to avoid or escape certain responsibilities or tasks. If someone realizes that by displaying pain behaviors, they can get out of doing certain chores, work, or obligations, they may be more likely to continue engaging in those behaviors. कि मीन्स अगर कोई भी आपको पेन है, आपको पता चलता है कि उससे शो करने से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप अवॉइड हो रहे हो, बच रहे हो, तो उसको उस तरह के बिहेवियर्स में इस्तेमाल करना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए अपनी पेन के बिहेवियर को शो करवाना। री इन्फोर्समेंट फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। द बिहेवियर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द री इन्फोर्समेंट ऑफ पेन बिहेवियर्स. If medical professionals respond primarily to pain behaviors rather than focusing on functional improvement, it can inadvertently reinforce the expression of those behaviors. And the last is beliefs and expectations. Individual beliefs and expectations about pain can play a role in reinforcing pain behaviors. If someone holds the belief that their pain is chronic, severe, or uncontrollable, they may be more likely to engage in pain behaviors as way to cope or communicate their distress. These beliefs and expectations can be influenced by personal experiences, cultural factors, or information from healthcare professionals. तो ये वो कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं री पेन बिहेवियर्स के री के लिए। आई होप कि इससे आप लोगों को अपना GDB करने में जरूर कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।